बेंगलुरु सेंट्रल का लोकसभा इलेक्शन, शांतिनगर में एमएलए एन.ए. हारिस की जबरदस्त रैली। कांग्रेस कैंडिडेट मंसूर अली खान को अपना कीमती वोट दें, कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाएं, मंसूर अली खान को कामयाब बनाएं। शांतिनगर के लोगों से एन.ए. हारिस की अपील। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಕೈ ಗುರುತಿಗೆ ವೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು। जी हां दोस्तों, शांतिनगर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तबकों तक पहुंचकर एन.ए. हारिस ने अपील की कि 26 अप्रैल बरोज जुमा को हो रहे लोकसभा इलेक्शन में मंसूर अली खान को अपना कीमती वोट दें, मंसूर अली खान को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। एन.ए. हारिस और मंसूर अली खान ने यहां के वोटरों से मुलाकात करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत की 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿयों का जिक्र किया। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ನೋಡಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಕಿಡ್ನಿ और कहा कि सेंट्रल में अगर कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आती है तो अवाम के लिए मजीद गारंटियां दी जाएंगी। इस इलेक्शन रैली में एन.ए. हारिस के फर्जंद और कर्नाटक यूथ कांग्रेस के सदर मोहम्मद नलपाड़ भी मौजूद रहे। बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) के चेयरमैन एन.ए. हारिस ने कहा कि इस बार बेंगलुरु के तमाम हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब होंगे। बेंगलुरु सेंट्रल में मंसूर अली खान एक बड़ी लीड के साथ कामयाब होंगे। एन.ए. हारिस ने भरोसा दिया कि असेंबली इलेक्शन में उन्हें जो लीड मिली थी उससे ज्यादा लीड शांतिनगर के लोग मंसूर अली खान को देंगे। एन.ए. हारिस ने कहा कि चंद वाकयात को लेकर बीजेपी कम्युनल कार्ड खेल रही है। क्राइम जिस किसी ने भी किया है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन मामलात पर सियासत हरगिज नहीं होनी चाहिए। मंसूर अली खान ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल के दीगर हलकों की तरह शांतिनगर के लोग भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। एन.ए. हारिस की लीडरशिप में शांतिनगर इस बार लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। A very hot day and politics is also hot, and in a final leg you are in final leg of the campaign, so what is your expectation? We are people who is living in hot only. We don't worry about hot or cold or rain or anything. We work, we are for the people, by the people, to the people. This is our principle. Congress party, we have come with our candidate now. Mansoor Ali Khan also has come. Shantinagar is fully prepared. Our team is working at the booth level. We are doing a road show today with the candidate. So candidate cannot go everywhere. So we are doing a road show where candidate is meeting a lot of people. Interaction is happening. 100% our candidate is winning. So Bangalore Central, Bangalore South, Bangalore North, Bangalore Rural, all 4 seats Congress is going to win. There is no doubt about that. People have already decided. People are fed up. 10 years they have seen. Our Prime Minister does not talk to media and media does not talk about him. What do? We are talking to media. We are fighting with you. We are in love with you. We are always with you. But you don't talk about what they have done. You have seen all the Prime Ministers have done hundreds of press meet. Only one Prime Minister of our country who has not done a single press meet is Prime Minister Narendra Modi. So again a communal card is being played here. Some incidents happen. See, communal card is what they want to do. Every communal has good and bad people. Anybody bad in any communal is not a human being. Whatever incident whoever has done, he belongs to any community, he should be hanged. There is no other question or appeal on that. So we don't want, because he could be a Hindu, he could be a Muslim, he could be a Christian, he could be anybody. If he has done mistake, he has committed a crime, he should be punished for it. And this kind of attitude should not be taken lightly, and this should not be turned into any communal religious and communal shape should not be given, because it is a girl and a boy. It is love between two of them and it is something else. It is not between two religions. There is no religion is involved in that.
He belongs to one religion, she belongs to another religion. So there are like that many incidents between all the communities. So please don't polarize with that. Let us all be good human beings, and whoever does mistake, who he belongs to, which community he belongs to, where is not a question. He should be punished. Government, the police should take serious action on all these things. So what is the expectation of lead from Shantinagar, sir? Shantinagar minimum, see, we have always given lead for parliament. You can check our records. This time also we will give more than what vote I got. I will give more than that lead to our parliament candidate. That is your assurance. So what is the assurance from Harish Bhai? So Harish Bhai has been right from the beginning with us and guiding me. And today also you have seen it's such a nice systematic campaign which is happening. And we are very, very hopeful that in Shantinagar we'll get a very good lead. So anything you want to share with the voters? You want to tell? See, the voters should come out and vote in large numbers and vote for a party which is in the interest of the country, in the interest of the constitution, and people realize where the country is heading, and this is the time they should stand up and count. And I request all the voters to vote for Congress party, because that's the only party which can protect the interests of the nation. Yesterday PM Modi was in Bangalore. So how do you see his We have shown the Chambu to Modi has seen our Chambu, because he has been giving Chambu to us from 2014 till now. The Chambu is there. So yesterday Modi has seen that. And actually, a rally was the half empty seats you could see yesterday. कैंपेन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है. नहीं, सब जगह कैंपेनिंग हो रहा है. एमएलए कर रहे हैं. एमएलए एने हैरिस तो पूरे बूथ लेवल में सब मीटिंग कर चुके हैं. आदमियों को पता नहीं है, बूथ लेवल में ही काम चलता है. सो बूथ लेवल में सब कर चुके हैं, और सबसे ज़्यादा वोट शांतिनगर ही लेके आएंगे, क्योंकि तो जब से कन्नन है, मुंसौमी जितने हैं पूरे कांग्रेस के ही एमएलएज हैं. इधर कोई कम्युनल एमएलए नहीं आया है इधर. तो आपको क्या उम्मीद है यहाँ तो सबसे हाईएस्ट वोट आएगा शांतिनगर से. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಹೇಗೇನಿ ಬಾ ಕೂಡ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು, here in front of your house asking for vote. Please cast your valuable vote. Serial number 1 and symbol. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂತ ವೋಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಲಿ. ಮುಂದೆ GST ಹಿಂದೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18% ಇರೋದು ಇನ್ನು 36% ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ